าพูดให้ชัดคือการต่อสู้กับสภาวะพระราชอำนาจล้นเกินนี่การมีสถาบันกษัตริย์ผมย้ำนะการมีสถาบันกษัตริย์ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยประเทศอื่นที่เขาเป็นประชาธิปไตยอังกฤษสเปนเดนมาร์กสวีเดนญี่ปุ่นเขาก็มีกษัตริย์และเขาก็มีประชาธิปไตยแต่สถาบันกษัตริย์ของประเทศเหล่านี้มันมีพระราชอำนาจล้นเกินถือไว้ก่อนนะครับถือไว้ช่วยถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางนะครับถือไว้ฟังเด็ดขาดชัยฤกษ์ชัยยะแห่งมหาประชาธิปไตยจงเกิดขึ้นณวันนี้การปักหมุดครั้งนี้เพื่อประกาศให้ทุกท่านรับทราบว่าเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมานะครับในการที่จะในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในเรื่องของการที่จัดให้พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่เหนือการเมืองอย่างแท้จริงเพื่อสู่ชัยชนะของโอเคนะพระเจ้าทั้งหลายเอาเจรจาต่อหน้ามวลชนว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าจะให้กับตัวแทนขององคมนตรีเดี๋ยวนี้วันนี้องคมนตรีได้ส่งตัวแทนออกมาแล้วतो बोरिंग भी है हैप्पी भी नहीं हूँ पैसा तो देखिए महीने में सैलरी तो थोड़ा तो मन में हाँ मेरा थोड़ा सा $1000 रहेगा सिर्फ अभी तो कुछ नहीं है खुद का बैलेंस से खाती हूँ मेरा नाम संगीता है मैं इंडियन हूँ मैं हांगकांग में रहने वाला हूँ 15 साल का ऊपर है ये वाला तो वायरस सो बैड जो भी होती है जो भी जगह पे जाओ मैं तो ज्यादा लोग होती है ना मैं इधर से नहीं जाती हूँ और मेरा बेटा बेटी छोटा है मुझे तो इधर का कोई नहीं है ना मेरा हस्बैंड और बेटा बेटी है 4 बंदे ही हूँ और कोई रिश्तेदार नहीं है मेरा तो मैं तो बहुत सेफ में चलना जाती हूँ और मेरा भी काम गई 5 महीना हुआ मार्च से मैं जनवरी से अप्रैल से मेरा काम नहीं है 5 मंथ ऑलरेडी मुझे काम नहीं है तो बहुत मुश्किल है अभी जॉब में तो मैं इटालियन का काम करती हूँ पास्ता पिज्जा सलाद 3-4 सेक्शन ही मैं करती हूँ अकेले भी किया कोई शेफ नहीं था मैं अकेले उधर में हैंडल किया पूरा रेस्टोरेंट किचन का मेरा 19,000 पहले सैलरी था हाँ उसके बाद मेरा टिप्स आ जाती है 1000 का तो 20 हो जाती है मेरा हस्बैंड का हो जाती है 20-25 ऐसे ही मेरा हस्बैंड का कोई टिप्स नहीं होती है तो मेरा 20 होती है तो मेरा हस्बैंड का तो 20 तो हो गई ना 40 हो जाती है 40 तो उसके बाद तो मेरा काम पर गई तो मेरा हस्बैंड का अभी सैलरी काटती है 8-10 हजार काट लेती है तो अभी 17-18 मिल जाती है The ethnic minority population of Hong Kong is about 4%. And what is shocking about this population is that 1 in 4 live in poverty. Airport, catering and construction, where a lot of our service users would ordinarily work, have now gone from being the working poor to the not working poor. And so there is a growth in the number of people who need assistance. If I look at January to May in 2019, we had 98 calls on our helpline. This year, January to May, we had over 700 calls on our helpline. And one of the biggest things we noted was people were asking for money. And they told us they wanted that money for food. कोई ना कोई बहुत जगह पर अप्लाई किया कोई रिप्लाई नहीं दिया तो आओ आने के बाद बोलती है सैलरी 14,000 देगा मेरा तो ऐसा वाला काम नहीं होगा 14,000 से मैं कभी काम नहीं किया The 14,000 job में what
rank were you getting? उसमें डेमी शेफ नहीं मिल रहा? नहीं। और वो क्या मिल रहा था? वो वाला तो ये किचन का हेल्पर कि वो मुझे ही देगा, तुम तो ऐसा वाला काम के लिए आया, तुम ऐसा वाला काम करोगे। तो मैं थोड़ा सा इंतजार कर रही हूँ, अच्छा मिले। आई होप कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो ऐसे ही ये वाला बोल नहीं सकती हूँ। होप आई एम नाउ इज नॉट हैप्पी, एवरी टाइम फीलिंग इज सो आई एम एट होम बोरिंग स्टे, दैट्स व्हाई कुछ अच्छा चीज खरीद के लो तो नहीं होगा इस बजट से। तो जो भी अच्छा होगा वायरस का जाएगा, जाने का बाद तो ठीक है, मेरा भी नौकरी ढूंढ के ले लूंगी। Yiwu is known as China's small merchandise capital. The city in the eastern province of Zhejiang makes everything from Halloween decorations to artificial Christmas trees. And this year, Yiwu is cranking out merchandise for US President Donald Trump's re-election campaign. In 2016, manufacturers here predicted Trump would win the election. Why? Because Trump was ordering more supplies than Hillary. Since then, Chinese social media has tried to gauge the outcome of the upcoming 2020 election with the so-called Yiwu index. The index can be used to predict election results by looking at which candidate orders more campaign merchandise. When it comes to Trump merch, there's plenty in the pipeline. Along with the traditional banners and hats, Chinese manufacturers are even cranking out items like pandemic protection face masks with Trump's name on them. But for business owners here, the incumbent president is a sensitive subject. 大姐，这边有特朗普的旗帜吗？没有。后边那个可以让我拍一下吗？ Since then, Chinese social media has tried to gauge the outcome of the 那 upcoming 可以拿过来让我 election with the so-called 看一下。猫娘哥点票，要吗？订单是吧？对，没有订单。没有订单。不用拍。下架的时候不用拍啊。 The few companies willing to speak to us off the record admitted that the COVID-19 pandemic dealt a huge blow to their businesses. And none of them said they had orders for merchandise for Trump's challenger, the Democratic Party presidential candidate and former Vice President Joe Biden. A search for Biden on the website of Chinese e-commerce giant Alibaba turned up about 5,200 results, compared to about 35,000 results for the keyword Trump. So, if you go by the Yiwu index, it could mean Trump will be re-elected. But the 2020 US election is also overshadowed by the pandemic and rising tensions between Washington and Beijing. Whether those factors will affect the accuracy of the Yiwu index remains to be seen when the ballots are tallied from America's election in early November. एक डिप्रेशन टाइप तो दिमाग में रहता ही है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो रहा है। और जब से तो बिल्कुल कम है, जब से मेरे बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं। मेरे कपड़े बेटे सारी तो मुझसे पहनी ना बांधे मैं सिला दे The bad part is that it takes a lot of time to recover from this, and during that time, when the patients need their families the most, they are unable to visit, and that has a negative impact on their psychology. So how we try to address that is that everybody is allowed their own phones. So we arrange for video chatting with the family, and as you would see, we've got a robot where on the screen they can have a teleconsultation with a psychiatrist if needed.